Assalamu alaikum students, hope you would be fine beta. Today we have to start with prose, your lesson that we have also discussed in English class. Again I gonna make you understand the prose session, so you must understand it first. It is in your English text, The Wolves of Cernogratz. Actually this is a fiction, and fiction story is based upon false stories, okay, that is not based on the true. This is all about false and imaginary stories. So the wolves of cernogratz. The present story is like the tales of olden times, whose heroes and heroine lived as long as certain birds and animals lived in a cage or in the open. Sometimes their lives came to an end when a sudden change in nature took place, like an earthquake or eclipse of the sun or moon, or even when animals, birds start behaving unusually as it happens here. ये जो प्रेजेंट जो स्टोरी है ये पुराने दौर की स्टोरी है, ठीक है, जिसमें हीरोज़ एंड हीरोइन बहुत बहुत अरसा ज़िंदा रहते हैं और कुछ बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं जो है वो ऑल्सो लिव केजेस में रहते हैं और कभी कभार ओपन खुला। कभी कभार उनकी लाइफ जो है जल्दी ख़त्म हो जाती है और कभी कभार उनकी लाइफ में ऐसे सर्टन चेंजेस आ जाते हैं नेचुरली, जैसे हमारे अर्थ को एक या ग्रहण, जैसे चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण होता है, और उसको हम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे दे आर रिलेटेड टू द बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स एंड बर्ड्स, एंड एज आई टोल्ड यू दैट इट इज़ अनयूजुअल. Now the story started with a lady, Amalai. This is an old woman. Worked as a servant in the castle of Conrad. Conrad जो है कैरेक्टर है जो हैम्बर्ग का मर्चेंट है. उनके कैसल में एक एमलाई नामे बूढ़ी खातून एज अ सर्वेंट काम करती थी. एंड हिज सिस्टर ग्रूबेल बैरोनेस, ठीक है, और उनकी बहन बैरोनेस. And Amelie had also been a governess, teaching the children of rich persons. One day, Conrad and the Baroness were talking about a legend about their castle. एक दिन Conrad and Baroness जो है अपने कैसल के बारे में बहुत ही ओल्ड स्टोरी के बारे में बात कर रहे थे. The Baroness told Conrad that people said that when anyone died in the castle, all the dogs in the village and the wild beasts in the forest howls all night long. And she said that it was a false story and no howling was heard the previous year when the old mother-in-law dies. Baroness Conrad को बताती हैं कि यहाँ पे लोगों ने मशहूर किया है इस कैसल के बारे में. यहाँ पे जो कोई भी मरता है तो गांव से जो भी कुत्ते वगैरह विल्ड बीस्ट हैं वो रात को शोर करते हैं पूरी रात को. तो उस पर उसकी बहन रिप्लाई करती हैं कि ये झूठी कहानी है और कोई भी मैंने आवाज़ें नहीं सुनी जबकि इनकी मदर इन लॉ की डेथ हुई थी. Amelie, the old governess, at once said that howling was heard only when a member of the Cernogratz family died in the castle,
MLI जो मैंने आपको बताया गवर्नेंस है, ओल्ड लेडी है, वो बताती हैं कि ये शोर शराबा जानवरों का तब होता है जब सर्नोग्रेट्स फैमिली के से कोई मरता है इस कैसल में, तभी ये शोर शराबा एनिमल्स का होता है। She said that before the death of the person, wolves came from far and near the hole in the forest. और जो भी सर्नोग्रेट्स फैमिली का आदमी मरता है इस कैसल में, दूर दराज से जो है जानवर, भेड़िए वगैरह करीब आके जंगलों में शोर मचाते हैं। Dogs around the castle also barked in fear and anger at the noise of the wolves. जो कुत्ते हैं वो कुत्ते भी भौंकते हैं वूल्स की आवाज़ सुन के, उनको कभी कभार गुस्से में और डर के मारे वो भी भौंकना स्टार्ट करते हैं। He also said that when the soul of the dying person left his body, a tree would crash down in the bark. वो ये भी बताती हैं जब एक मरे हुए इंसान की रूह निकलती है तो वहाँ जंगलों में एक दरख्त खुद ब खुद गिर जाता है। She claimed that she was a cernogratz family. वो कहती है कि मैं cernogratz family से ताल्लुक़ रखती हूँ। When she became very poor, she changed her name as she had to teach children for money. And the Baroness and her brother did not believe her. वो बताती हैं कि जब हम गरीब हो गए थे तो मैंने अपना सरनेम चेंज करके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया पैसों की खातिर, और मैंने अपना सरनेम चेंज कर दिया था। इस बात पे बैरोनेस और उसके जो ब्रदर हैं तो वो उसकी बात पे यकीन नहीं करते। Just before the New York, Emily fell seriously ill. अब वहाँ पे उसी कैसल में एक पार्टी होती है और वहाँ पे पार्टी से पहले पहले जो है एमिलाई बहुत ही बीमार हो जाती हैं, बहुत ही। Dogs around the castle began barking. They were barking in fear and anger at the wolves howling in the distance. Before the Baroness could call the doctor for Emily, a tree crashed in the park. Emily died. The noise of the animals and breaking of the tree at Emily's death proved that the cernogratz legend was true. The newspaper also published the news that Emily, a cernogratz, had died. अब जैसे ही एमिलाई जो है बीमार पड़ जाती है तो कॉनरेड एट बैरोनेस को पता चलता है और बैरोनेस डॉक्टर को कॉल करने ही जाते हैं तो एमिलाई जो है मर जाती है और उसी वक्त ही एनिमल्स जो है स्टार्ट शाउटिंग इन द फॉरेस्ट एंड एट वंस ट्री क्रैश डाउन इन द फॉरेस्ट। और एमिलाई की डेथ ये प्रूव करती है कि एमिलाई जो है सर्नोग्रेट्स की लेजेंड थी और इट वाज ऑल अबाउट ट्रू। और न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है कि एमिलाई had died and she was the member of cernogratz family. So dear students, this is the summary of the prose cernogratz family, the wolves of cernogratz. I hope you understand it, and please read down the prose and copy it in your register and read it again and again. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो do ask me, and please communicate, and फिर अगर आपको कोई समझ में नहीं आता तो आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, then I will let you know. Thank you so much. Do study for your better future. Thank you. Allah Hafiz beta, and I will send you questions and summary of this prose. Take care. Allah Hafiz.